Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon trading session. And I can see more people are joining in. We'll start the session in next 2 minutes. Devin sir is joining us. Devin sir, please join the stage. Yes, we can see you now. I hope I'm clearly audible and visible. Please write yes in the chat. Screen and then we'll start. So, good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma, your community manager. Welcome to the afternoon trading session. आज हमारे साथ हैं देवेन sir, Devin Mehta ji, who will be taking the session. We'll start with the options, indices, then we'll go towards the stocks, try to share the BTST. And also, please note today we have an evening trading session that is commodity expiry at 6 p.m. today. So, don't forget to join that. Devin sir, please turn on your camera and then we are good to go. Yes, so I hope my voice is audible and my screen is visible, right? Yes, sir. Your screen is visible. You are audible and visible. Okay, so we'll just go through the Nifty. So this is Nifty's daily chart. If we see the daily chart, we have seen a breakdown below 23,000 levels, and today it is trading very close to the next support of 22,800. The overall market, if we see, then the strength is missing in this market. There is no good move in any of the stocks. Even large caps are going down. So overall view is bearish. It is Nifty is almost approaching 22,800 levels. We have monthly expiries to come in the next 2-3 days for Nifty, Bank Nifty stocks, as well as there is monthly expiry for Sensex as well as Bankex tomorrow. So there will be the volatility, and one should trade with a strict stop loss when trading with options. So we'll now just cover Bank Nifty. So this is Bank Nifty's index. Currently, it is trading around 48,075 levels. Today, Bank Nifty, we have seen that there was a comparative strength in Bank Nifty. Some of the banking stocks were doing well. For example, ICICI Bank, uh, and also State Bank of India, they have shown some bounce back from the lower levels. On Saturday we have seen ICICI Bank's results. They were good comparatively to other banks, and ICICI Bank have shown a good bounce back from lower levels. But again, if Bank Nifty sustains below 48,000 levels, we can see some further correction in this particular index as well, and it can come down towards the next support of 47,400, 47,500 levels. So that is the immediate support for Bank Nifty if it breaks 48,000 and sustains below that. So this is about Nifty, Bank Nifty. We will be tracking some stocks as well as some options of a particular stock. If we see a particular sector, then we have seen that IT sector is giving up. IT sector was showing a good strength from last many days, but today, after news from China that they have built a good and faster AI which is cheaper compared to US, after that we have seen that there is a sell-off in IT stocks, and IT sector is moving downwards. It is kind of a topping out sector, and we will be watching the stocks of IT where we can we can buy, put, and we can trade accordingly. So TCS is one of the counter which is on my radar. This is the intraday chart of TCS, and we have seen that there is a support, and it is trying to just give a bounce back. So if TCS gives a bounce back towards 4070 levels, we will try to enter a put option over here, or else we will try to enter a put option if TCS breaks its day low. Currently, it is trading in a range of if we consider the intraday range, after breaking down a major support of 4070, it is trading sideways. So if we get a bounce back in this particular counter, we'll enter put option in bounce back, and if it breaks the today's low, then we will be witnessing some more correction in this counter, and at that time we will try to enter put option. So as of now, 4050 put option is on my radar. uh,
we will be tracking February 27th Feb put option. Reason being that this is the last week of monthly expiry, and there will be theta decay as well as some margin requirement, extra margin requirement. To avoid that, what we'll do is we'll be looking for a 4050 put option of 27th Feb. So that is on our radar. So we can just pin that particular message for all our viewers, and till then we can take some queries. That stock is on my radar and will definitely give a trade if we find any moment in this particular counter. Guys, please note strikes on radar TCS 4050 put 27 Feb. So Polycap future short at 5680. Can I hold till 25500? Polycap, right? Yes. Polycap Future short, futures. yeah, At what 5680. particular? 5680. Okay, Yes. I think the shorting level was decent, and I hope they have shorted for intraday. So 5680 is the shorting level, and that is the resistance for this particular counter, and that is the intraday resistance. So I think one can hold this particular counter, hold the future short with a stop loss near its cost. So कोई लॉस नहीं होना चाहिए ये काउंटर में, एंड अगर स्टॉक नीचे जाता है, फर्दर करेक्ट होता है, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है. ओवरऑल जैसे हम लोग देख रहे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेरिश है. नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं चार्ट्स पे कहूँ तो इट इज अराउंड 5460 5470 ऑड लेवल्स. तो 5470 के आसपास के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन अगर पोजिशनल शॉर्ट रखना है तो डेफिनेटली कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं. और थोड़ा सा ओवरसोल्ड है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे रखे, इसमें लॉस ना करे, and try to book decent gains in this particular short position. Sir, view on Reliance. Yeah, before going to Reliance, Anuj, one more thing I need to just tell you that Nifty is trading very close to its day's low, and this is the Nifty chart, right? So Nifty is trading around 22,800 levels, and if these levels are breached, and if Nifty sustains below that level, then we will see some more correction. Hence, and today, tomorrow we have an expiry of Sensex. So one of the strike of Sensex which is on my radar is Sensex. I'll just show it on the chart. It is 75,300 put option. So it is trading around 228 level right now. This is the intraday chart of this particular strike. So we have seen a steep consolidation in this particular put option, whereas Nifty has shown some correction from higher levels. So if we get a breakout above 250 levels, then we can see a good up move in this particular put option. So this is also a strike on our radar. And on the lower side, there is support around 160, 170 levels for this put option. So even this is the strike which is on our radar, as tomorrow is expiry for Sensex and BankX. So we'll be keeping the strike of 75,300 put of Sensex on our radar. Sir, Escort 3350 put. Escorts 3350 put. Okay. Can you tell me at what price it has purchased? We don't have the price, sir. We're just asking for in view. Okay, not a problem. So I think if they have purchased this particular option from lower levels, can definitely hold. The option is trading at its day's high. 31 is the current market price of that particular option. So one can hold with a stop loss of 27. I'll just show the charts of escorts as well. So we'll get a view of the stock. So again, we have seen a breakdown breakdown in escorts below 3410 levels.
So I think the overall trend is bearish. I think stock can further correct towards 3295 levels. So 3000 more 50 points down move is possible. So one can definitely hold the put option which was purchased. And fresh buying of a put option is not advisable. Reason being, the stock is already down by around 3.5%, and there can be a theta decay into the options, as well as a sideways move or a small bounce back will hit the stop loss. So hence, those who are holding can hold the put option for more 50 points down move in this particular counter. So Tata Motors. So overall, the trend is bearish. There is no pullback visible, no reversal visible in this particular counter. There is a strong resistance around 820 levels, and the stock will show some reversal only if it closes above 820 levels. Till then, there is no positive view in this particular counter. Those holding from lower levels for long term can hold. Those who want to buy should only enter if stock crosses above 820 levels. Till then, the stock is avoided. Sir, NH quantity 50 at 1357. Hold or exit? What is the stock name? NH. Right. So I think overall the chart structure is sideways in this particular counter. So I think one can hold with a stop loss of 1245. On the lower side, if this levels is breached out, then one should try to exit this particular counter. Overall trend is sideways. We have seen a consolidation in this particular counter. So can hold with a strict stop loss of 1245. Sir, Suzlon quantity 3055. At 55. Okay. So there was a strong support around 53 54 levels in this particular counter, and we have seen a breakdown in this particular stock. So I think one should wait in this particular counter. Those who have purchased the 3000 quantity, I think the next support for this counter is around 40.45.5. uh, but overall the strength is missing in this particular counter. The stock will show some reversal only if sustains above 58.5 levels. So these are the levels one should look at for, and if it has purchased for short term, one should trade with a strict stop loss, and if it's for long term, can hold. And if it crosses 58.5, we can see a good bounce back and reversal in this particular counter. Sir, IRFC stock option 27 Feb call 140 bought at 9.1. What to do? IRFC stock option 140 call. 140 call. Okay, so I think the overall structure is weak, and I think those who have bought call option, I think should try to exit on bounce or can exit, and one must definitely keep a stop loss. The overall structure is not good in this particular counter. If IRFC breaks 133 levels, we can see some more correction in this particular counter. There is no strength, and hence one should exit the call option. Sir, IDFC Bank 600 shares bought at 82. What to do? Should I hold, sell, or buy more? Okay, so I think after results, the stock has given a fresh breakdown. IDFC First Bank is trading at 56.70 levels. Uh, Bought at 82. I think the buying price is higher, on the higher side. As we can see on the charts, there is a stiff resistance at 84 levels itself, and the stock has been moving lower and forming lower high, lower low formation. So I think one should
wait. I think 53 is the next support for this particular counter. One should wait for reversal, and if the stock has been bought for short term, one can try to exit on bounce. Sir, Vare Energy. सो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है. ओवरऑल स्टॉक में हम लोग ने देखा है कि एक अच्छा अपमूव लिस्टिंग के बाद आया. देन स्टॉक है स्टार्टेड करेक्टिंग. आई थिंक अगर किसी ने आईपीओ में लिया हुआ है, आईपीओ में लगा हुआ है, तो शायद प्रॉफिट में होंगे. सो अगर प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर ले. अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो ऑन द बाउंस देयर इज अ रेजिस्टेंस अराउंड 2675. काफी दूर है ये रेजिस्टेंस. अगर मैं उसके पहले वाला रेजिस्टेंस की बात करूँ 2480, that will be the immediate resistance for this particular counter. वो भी काफी दूर है. So I think एग्जिट कर लेना चाहिए अगर आईपीओ लेवल से है. अगर कहीं ऊपर के लेवल्स पे बाय किया है तो वेट कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो होल्ड कर सकते हैं. सर जोमेटो. ओके. सो जोमेटो में भी हम लोग देखे तो एक ऊपर से करेक्शन आया है स्टॉक में. ऑन द लोअर साइड देयर वाज अ सपोर्ट, जो 240 के आसपास का सपोर्ट था, वो ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने दूसरी तरफ एक मूव दिखाया. आई थिंक थोड़ा सा व्यू अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है. लॉन्ग टर्म के लिए अगर लिया है तो होल्ड करे. नीचे में एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वीकनेस है काउंटर में. सो आई थिंक जब तक ये लेवल कोई रिवर्सल नहीं देखा था, अगेन 220-25 के ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक कोई खास बड़ा रिवर्सल नहीं है. ऑन द लोअर साइड इट कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सपोर्ट ऑफ 180. काफी दूर है ये सपोर्ट, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए. सर एरिडा. ओके. सो इरडा की हम लोग बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है. अगर ये लेवल से 183 के आसपास अगर वो ब्रेक होता है तो देन फर्दर करेक्शन स्टॉक में आ सकता है. नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 162 लेवल्स, तो काफी दूर के सपोर्ट स्टॉक में दिख रहा है. तो अगर 183 ब्रेक करता है तो करेक्शन आ सकता है. दोस्तों हैव परचेज 183 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स. तो निफ्टी का हम लोग चार्ट फिर से एक बार देखते हैं. तो वापस हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निफ्टी हैज ब्रोकन 22,800 लेवल्स एंड इट इज सस्टेनिंग बिलो दैट. ये इंट्राडे चार्ट है. ये जो नीचे का एक लाइन ड्रॉ किया है दैट इज दिस नेक्स्ट सपोर्ट इन निफ्टी. अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगेन थोड़ा सा फर्दर करेक्शन आ सकता है. हम लोग ने सेंसेक्स का पुट ऑप्शन की बात की थी. अभी भी सेंसेक्स का जो पुट ऑप्शन है 75,300 का, दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 230 एंड इट हैज नॉट क्रॉस्ड 250 लेवल्स. तो जब तक ये सेंसेक्स का पुट ऑप्शन 250 के लेवल्स क्रॉस नहीं करेगा, आई थिंक हम लोग वेट करेंगे. रीजन बिंग निफ्टी करेक्ट हो रहा है, लेकिन एक बाउंस बैक आ सकता है. क्योंकि ऑप्शंस में वैसे ज्यादा बड़ा मूव हमें नहीं दिख रहा है. सो वी विल वेट टू एंटर एनी पुट ऑप्शन. टिल देन वी वेर आल्सो ट्रैकिंग द टीसीएस ऑप्शन. सो आई जस्ट शेयर द चार्ट ऑफ टीसीएस. टीसीएस में एग्जैक्टली हम लोग को जो एक्सपेक्टेड था वो बाउंस देखने मिला है. 4070 के आसपास ये स्टॉक अभी भी थोड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है. एंड हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बाउंस बैक अभी आ रहा है. सो आई थिंक अभी भी हम लोग वेट करेंगे, ऑप्शन में एंटर नहीं करेंगे. विल वेट टू एंटर अ पर्टिकुलर पुट ऑप्शन सो दैट वी गेट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है सो वी विल अवॉइड, बट वी विल ट्राई टू गेट अ ट्रेड विद अ गुड रिस्क रिवॉर्ड एंड बेटर टाइमिंग. Sir, do we have any trade? No, as of now, as we have discussed that Nifty has broken its support of 22,800, and even all the stocks and even all the major sectors are going downward. So there is no particular trade as of now. We are tracking put option of Sensex as well as
TCS, but we haven't seen any particular movement. So we will be waiting for trade, and if we get the opportunity, then only we'll trade. Sir, any BTST as of now? No, I think overall, as we have already discussed, the strength is missing in the overall market, and it is trading at its major support levels of 20 to 800. So, if we go for a short position, then also there are chances of stop loss getting triggered, as we can see a bounce back from the support levels. And overall trend is bearish, and we are not comfortable going long in any of the counters, because the overall we have seen that major uh, stocks have given their results, but overall after results, even if the result is good, the stock has been beaten down from higher levels. So we are not comfortable going long as well, but it is trading at support levels, and hence even carrying a short position will be quite risky. So I think we should wait for any particular setup, and after that only we will be giving any trade if we find any. If we don't find, I think one should wait and don't hurry to trade, as there is a risk involved, and hence we will wait for some more time. Till then, we can take some queries now. Sir, Sun Pharma for long-term view. Okay, so overall, this is the daily chart of Sun Pharma. Currently, we can see that it is trading sideways to slight bearish, but if the view is for long term, definitely stocks looks good. On the lower side, it is trying to hold the levels of 1720, 17 uh, 30, 1720 levels. So I think one can buy this particular counter for long term, and also if there is a dip towards the support levels of 1730, one can try to average this particular counter only for long term. For short term, one should wait for a particular reversal. The stock can move with a good speed above 1845, 1850 levels. So that is the resistance for this particular counter. उसके ऊपर अगर जाता है तो एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है. टिल देन लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. नीचे आए तो भी बाय कर सकते हैं. अभी थोड़ा बाय करके लोअर लेवल्स पे भी बाय कर सकते. So stock option over a reality called 2127 Feb. Bought at 71. ओवरऑल रियलिटी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नहीं है. इनफैक्ट देर आर ब्रेकडाउन्स इन मेजर रियलिटी स्टॉक्स. सो आई थिंक अगर कॉल ऑप्शन है, एग्जिट कर लेना चाहिए. स्टॉक एग्जैक्ट एक सपोर्ट के आसपास है तो बाउंस आ सकता है. बाउंस में ऑप्शन चलेगा कि नहीं उसमें डाउट है, क्योंकि वी हैव द मंथली एक्सपायरी इन 2 to 3 days फ्रॉम नाउ. सो कुछ मेजर कॉल ऑप्शन में मूवमेंट आएगा ऐसा लग नहीं रहा है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट स्टॉक में भी अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आता है तो भी कॉल ऑप्शन में कुछ बाउंस बैक नहीं एक्सपेक्ट करेंगे. सो वन शुड एग्जिट द कॉल ऑप्शन, and I'll like to repeat that one should trade with a strict stop loss when trading options. Sir, CDSL. CDSL today, the stock is down by around 11%. This is because of the results. The overall results of this particular counter was not as per the market's expectations, and that's why we have seen that the stock has been corrected by 11%. On the lower side, 1245, 1250, 1250 का बहुत ही strong support है. If this particular support level breaks, then we can see some more correction towards 1120 लेवल्स 1120 तक आ सकता है. तो जो हम लोग ने लेवल्स डिस्कस किए, हम लोग ने जो सपोर्ट्स बताया उस पे ध्यान दे, एंड वन शुड अवॉइड फ्रेश बाइंग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर जब तक रिवर्सल नहीं आता. Sir, your view on Angel One?
सो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे हम लोग तो थोड़ा सा बेरिश है, वीक है. ऑन द लोअर साइड 2020 इज द सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर काउंटर. उसके आसपास स्टॉक अभी भी आ सकता है, करेक्ट हो रहा है ऊपर से. एंड वी हैव सीन दैट द बाउंस बैक व्हिच वाज केम बाउंस बैक जो आया था वो सस्टेन नहीं हुआ. ऊपर 2600 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां से वापस से एक बार सेल ऑफ देखने मिला है. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है. 2600 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक कोई फ्रेश बाइंग का व्यू नहीं है स्टॉक में. नीचे में 2020 तक स्टॉक आ सकता है. देयर इज अ मोर रूम फॉर द स्टॉक ऑफ अराउंड 180 190 पॉइंट्स. सो अनुज, हम लोग निफ्टी की बात कर रहे थे. जैसे मैंने कहा कि निफ्टी सपोर्ट लेवल्स के आसपास है. 22,800 के आसपास सपोर्ट है. वहां से एक 30 पॉइंट्स का मूव हम लोग ने देखने मिला. एग्जैक्टली द सेम, एंड दैट्स व्हाई वी हैवंट एंटर्ड द पुट ऑप्शन ऑफ सेंसेक्स. हम लोग ने बात भी किया कि सेंसेक्स के पुट ऑप्शन में वो मूवमेंट अभी तक नहीं आया है, एंड दैट्स व्हाई वी अवॉइडेड. अगर हम लोग सेंसेक्स का पुट ऑप्शन एंटर करते तो शायद कुछ प्रॉफिट नहीं होता. एज इट इज ट्रेडिंग अराउंड 200. सो 230 वाला ऑप्शन 200 हो गया. ओवरऑल चार्ट में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, कोई मतलब रिवर्सल जैसा ये नहीं है. लेकिन फिर भी एक हल्के बाउंस बैक के बाद भी एक जो पुट ऑप्शन हम लोग ट्रैक कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डीके देखने मिला. सो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वीक, बट जब तक सेटअप अच्छा नहीं मिलता तब तक ऑप्शन में ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट हो गया. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इन ऑप्शंस. जब तक ऑप्शन के सेटअप अच्छे नहीं होते तब तक ज्यादा बड़ा मूवमेंट हम लोग को ऑप्शन में नहीं देखने मिला. The Nifty was falling, futures were going down, but again options were not moving as per our expectations, and that's why we avoided to trade put option. So I hope किसी ने trade नहीं लिया होगा, and everyone is saved. We are also tracking TCS put option. TCS ने हम लोग ने जैसे बात किया 4070 के लेवल्स के रेजिस्टेंस है. अगर ये कैंडल का हम लोग हाई देखें, so that is around 4068. so exactly वही लेवल्स के आसपास स्टॉक आने की कोशिश कर रहा है. trying to move towards the resistance. it is facing resistance, but again as we discuss about the Sensex option, TCS का भी option जो 95 के आसपास ट्रेड कर रहा था अभी 91 के आसपास ट्रेड कर रहा है. सो अभी भी ऑप्शंस में वैसे देखा जाए तो पुट ऑप्शंस में ज्यादा मूवमेंट है नहीं, whereas जो कॉल ऑप्शन है उसमें डीके कंटिन्यूअस हो रहा है. सो ऑप्शंस में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट है. वन शुड वेट एंड प्रॉपर सेटअप के बाद ही ट्रेड करे. टिल देन वी कैन टेक वन मोर क्वेरी एंड आफ्टर दैट विल एंड द सेशन. वी हैवंट गॉट एनी ट्रेड, एंड आई थिंक कंपलसरी ट्रेड करना भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. सो विल टेक वन मोर क्वेरी एंड वी कैन एंड द सेशन आफ्टर दैट. Sir, view on ABS LAMC. So this is Aditya Birla Sun Life AMC. So again, a massive breakdown is seen, and the stock is down by around 10% today, 9.5%. This is because of results, I think. We have seen that there will the stock has given the results, and I think the result must be weak, and that's why we have seen a sell off of around 9%. So I think on the lower side 617 615 एक support है, वो ब्रेक करेगा तो और भी थोड़ा नीचे 580 575 तक जा सकता है स्टॉक. ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है. स्टॉक में फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए. दोज आर होल्डिंग फ्रॉम हायर लेवल्स थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कोई जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक कोई फ्रेश सजेशन नहीं है स्टॉक. So yes, that will be all for today's afternoon session. Thanks everyone for joining in. See you again at 6 p.m. for a community expiry session. And this Friday we have